So this is the application that we will be requiring for our IoT home appliances system. This is the Smart Life application, which you can find both in Play Store and App Store for Android and iOS respectively. So as we enter this application, you can see there is this menu on the left side corner which gives you this option to set your family name and also add the family members here, and provision to set your password. There is the share button which you can share along with your family members. So right here it reads, Sucam invites you to join my family. So the first step is to add the gateway, IoT gateway, which you can see right here. This is the USB gateway, and at the current moment it is at the reset mode and thus flashes a red LED. So simply adding a new device, here you have to input your SSID or username of the Wi-Fi and simply click on the search button. It will prompt you with a reminder to add a password. So if you don't, just go ahead. So as you can see, the red LED has turned into a green one and the gateway has been connected. So it is as simple as it seems. So previously I had already added all the devices to the gateway, so it shows the list right here. So starting from the top, this is the PIR motion sensor, this is the gas detector sensor, the smart SOS for emergency purposes, and the AC partner mini to connect your ACs. So at the current moment all devices are offline. Coming back to the main user interface screen, this is the list of all the devices that can be connected. It can be connected to more than 20 also. So the gateway is online, the smart SOS right here. So it will just wait for these devices to be connected. Once they have been connected, you can enter the user interfaces and control the devices respectively. This is the tag. So for example, if you have a lot of devices and each have their various applications, so you can put them in their respective group. For example, temperature control, security, lighting, and other. This is the smart linkage option. So you can simply connect devices. So for example, if someone is at home and the PIR motion sensor reads their radiations, so it can disarm or turn the lights. Simply the user interface reads that if or then. So just as a simple computer application, if else then. This is the history tab which gives you the device information. So this is the basic user interface of the application. तो यहाँ पर जो ये डिवाइस है, दिस इज़ द इंटरनेट गेटवे. बेसिकली व्हाट इट डज इज, इसको कोई सा भी एक पावर सप्लाई देंगे हम, USB अडेप्टर पे लगा देंगे या PC की पोर्ट में लगा देंगे, एंड ये अपना ही एक नेटवर्क बनाएगा. जो सारे डिवाइसेस जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल गैस डिटेक्टर, PIR मोशन सेंसर, SOS बटन एंड दी AC पार्टनर मिनी, तो इनको एक नेटवर्क से कनेक्ट कर लेगा अपने साथ और अपना खुद का नेटवर्क बनाएगा जो हम एक ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं. दिस इज बेसिकली IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. तो हम सारे डिवाइसेस को एक नेटवर्क पे कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू दिस गेटवे. देन वी कम टू दिस गैस डिटेक्टर, जो बहुत सारी गैसेस, फॉर एग्जांपल LPG, ब्यूटेन, मीथेन टाइप्स जो हार्मफुल गैसेस होती है, और स्मोक फॉर एग्जांपल जो फायर से भी निकलती है, तो उनको डिटेक्ट करता है और एक अलार्म जनरेट करता है जो आपके हैंड फोन पे जो एप्लीकेशन है उस पर डिटेक्ट करता है एनिमेशन के थ्रू. दिस इज द PIR मोशन सेंसर, जो कि बेसिकली रेडिएशन पे काम करता है. IR रेडिएशन जो आपकी बॉडी की हीट से निकलती है, वो हम देख नहीं सकते, वो सिर्फ एक रेडिएशन के फॉर्म में निकलती है जो ये डिटेक्टर सेंस करता है. इसकी रेंज 15 फीट फॉरवर्ड रेडियस तक जाती है. तो जब भी कोई पर्सन या फिर एनिमल जिसका ऑब्वियसली बॉडी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से डिफरेंट होगा, वो इसके 15 फीट रेडियस के अंदर आता है, तो ये एक सेंस आउटपुट देता है जो फिर से आप अपनी एप्लीकेशन के थ्रू देख सकते हैं. देन दिस इज द SOS
रिमोट एक बटन की तरह काम करता है। SOS बेसिकली एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है जिसका मतलब होता है सेव आवर सोल। तो जब भी आप इसको दबाएंगे तो इसका मतलब होगा कि इमरजेंसी है कहीं, और इसका तुरंत एक मैसेज आ जाएगा आपके एप्लीकेशन में जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या इमरजेंसी है। कमिंग टू दिस इज द AC पार्टनर मिनी, जिसका पर्पस है कि ये किसी भी AC एयर कंडीशनर के साथ अटैच हो जाएगा। एक पीछे मैग्नेट है, सिंपली आप इसको कनेक्ट कर लीजिए AC के साथ, और बाय प्रेसिंग दिस बटन इट एक्टिवेट्स, एंड ये एप्लीकेशन में जो आपके फ़ोन में जो एप्लीकेशन है उससे कनेक्ट होता है और ड्राइवर्स इंस्टॉल कर देता है इसके ड्राइवर्स अपने फ़ोन में। और जिस भी रिमोट के साथ आप इसको पार्टनर करते हैं, बेसिकली जो रिमोट काम करता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, तो उसके ड्राइवर्स इंटरनेट पे आप अवेलेबल होते हैं और वही एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इसके ड्राइवर्स इंस्टॉल कर लेगा, ताकि वो रिमोट AC का और ये कनेक्ट कर ले अपने आप से, ताकि आप जो भी एप्लीकेशन अपने फ़ोन से बटन प्रेस करेंगे वो ये रीड कर ले। सो हमको AC का रिमोट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, और ये सब कुछ वाईफाई पे काम करता है। Here we have the application. This shows the user interface of the application that is on my smartphone. Here is the SOS device which is used for the emergency purposes. So for example, if any family member or any member pushes this button in any distress or any situation, for example, I have just pushed the button, so the notification comes on the application. This application can be with any senior member of the family or the admin which control all the devices. So here the notification states that an alarm has been generated and it says SOS. So SOS, as I told you, means for save our souls. This is a standard international emergency protocol. So if you push the button, the notification is popped up. Here the application has another interface which beeps an alarm every second whenever the button is pressed until the situation is under control. जब भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाएगी तो जो एडमिन है या यूजर है ऑफ द एप्लीकेशन कैन पुश द बटन टू शो दैट द सिचुएशन हैज बीन अंडर कंट्रोल। हियर ऑल्सो एज यू कैन सी एक डेटाबेस मैनेज हो जाता है जिसके अंदर डेट्स और टाइम्स के साथ में अलार्म्स का इंफॉर्मेशन आ जाता है कि किस टाइम पे और किस डे पे अलार्म बटन प्रेस हुआ था और कितनी देर बाद वो सिचुएशन हैंडल हो गई थी। फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी इज ऑल द डेटाबेस ऑफ द डेंजर एंड द सेफ पैरामीटर्स जब प्रेस हुआ था। फॉर एग्जाम्पल आई शो यू अगेन, द बटन इज प्रेस्ड and the alarm starts generating on the phone itself. तो जिस यूज़र के पास फ़ोन है उसको पता चल जाएगा कौन से डिवाइस पे किस टाइम पे अलार्म बचा है और वो उसको हैंडल कर लेगा सिचुएशन। सो दिस वाज द यूज़र इंटरफेस ऑफ द SOS डिवाइस। Here we have the PIR motion sensor which detects every motion based on the human body temperature, which is basically a kind of radiation. So here, this is the user interface of the application for the PIR device. At the current moment, the setting is set to disarming mode, so it isn't reading anything. The moment we put it on the arming mode, that is, it is protected now. So whenever there is movement in front of the device, so there is a sensation and thus the application reads the motion. Again, if I move my hand over to the device, there is movement again and the PIR has sensed it for the second time. Here it displays the date and the time at which the PIR senses the motion. So this was our application for PIR. Now we'll discuss about the AC Partner Mini device here. This connects directly to the AC and then we can connect our phone over Wi-Fi to this device. This device automatically
installs the RF drivers of your AC remote that you have with your AC. So again, this is the user interface for this device on our application. At the current moment it's switched off. This is how we turn it off through our phone. Here we can adjust different modes, for example dry, wind, heat, auto or cool. This is the auto swing or manual mode, and this is the fan speed selection. We can also set the timer for our AC to be switched on or off. And you can obviously adjust the temperatures here.